Okay. Namaste, good morning, and welcome everybody. I know this has been a very informal start, but I think that's good because I want the tone of today's event to be slightly informal, more conversational. That's why we have created this kind of structure. My name is Ishwari Deshpande, and I'm really happy to welcome all of you to the first edition of what I am calling Passing the Torch. So, in a time like this, what I feel sometimes happens is that we want to be supportive of everybody, and if that is not possible to do without saying yes to everything, then it's a bit of a problem for the art field. Kathak as a field needs to have a little bit of give and take. Some things you like, some things you don't like. And I have grown up hearing some stories of very senior artists before all of our generation, where उनको चलता था, वो कभी बोलते थे कि आज इतना अच्छा नहीं हुआ, या आज ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था. And it always made me feel very nice and pleasant to know that they could be friends even if they did not agree to everything. So this was the background, and with that in mind, we come to the first topic that I was hoping the panel can discuss today, which is critique and criticism in the field of Kathak. Because open conversation जो concept है, उसमें it's not just open conversation about what you like and don't like, but critique कि अगर हमने कुछ किया और किसी ने कुछ क्रिटिसिज्म हमें दिया तो वो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं. उल्टा अगर हमने कुछ देखा और हमें क्रिटिसिज्म देना है तो वो हमें कैसे देना चाहिए. सो मे बी वी कैन स्टार्ट राजश्री जी, इफ देयर इज समथिंग यू कैन शेयर विद अस अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, योर थॉट्स ऑन दिस. प्रथम ये सोचने लगी मैं कि कितना महत्वपूर्ण विचार है ये. फिर आज का जो आप जो यंगस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उसे किस प्रकार से देखते हैं, ये जानना, मतलब मैं बोलने के अलावा मैं जानने में बहुत इच्छुक हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है. क्योंकि इसके रेpertoire के बारे में, इसके क्रिटिक के बारे में, जो हमेशा किसी भी कलाकार के मन में ये इच्छा होती है कि मैंने जो कुछ किया है वो तो अच्छे भावना से, अच्छी मेहनत से, लगन से करते ही, लेकिन दूसरे क्या सोचते हैं और किस प्रकार से उसे लेते हैं. तो आज के डिस्कशन का ये पॉइंट है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे कभी भी रंगमंच पे कोई नर्तक या नर्तकी आते हैं तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है उनका, वो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, शुरुआत तो या वहीं से हम लोग शुरू करते हैं. वहाँ से हमारा इम्प्रेशन बन जाता है और उसके बाद उसका नृत्य. बाद में तो बहुत प्रोग्राम करता रहा, लेकिन सब लोग तो अच्छा ही बोलते थे, लेकिन जो मेरे घर असली क्रिटिक्स थे वो मेरे घर वाले थे. मेरे मम्मी पापा और भाई बहन, वो मुझे बोलते थे साफ साफ कुछ, अरे ये क्या तुम्हारी इतनी सांस फूल रही है, टुकड़ा बोलने जा रहे हो, तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी. मतलब वो सब अच्छे क्रिटिक्स मुझे वो घर में मिले. एक छोटी सी बात है, आधा मिनट बताता हूँ कि एक मेरा NCPM में प्रोग्राम था और एक नया तबले वाला बनारस से यहाँ पे आया था. तो मैंने उसको लिया, उसको कुछ डांस का ज्ञान नहीं था, फिर भी मैंने उसको रिहर्सल करवाया. वहाँ पे वो जो तबले वाले थे वो इतने बौखला गए, वो मतलब डर गए कि वो सब टुकड़े सब भूल गए. अब मेरे लिए भी इतना प्रॉब्लम हुआ कि अब मैं क्या करूँ. तो मैं अपनी श्रीकांत पारगावकर जी को कहा कि आप ऐसा करिए, अभी अब गाने शुरू कर दीजिए, अलग अलग टुकड़ी करते, भजन करते. और हमने कैसे, तो वो अब रोहिणी जी की कुछ मुझे बोली नहीं, मेरे से मिलने भी नहीं आई. मैं समझ, तो वो उसके बाद मैं समझ गया था कि ये, क्योंकि मुझे ही मालूम था कि ये प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ था. लेकिन उसके कुछ साल बाद जब मैंने और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा 2 दिन का फेस्टिवल किया था. और उसके बाद मैं जैसे डांस करके जब शाम को मैं घर पहुंचा तो मुझे रवनीता का कि नंदकिशोर, मैंने आज तुम्हारा डांस देखा और मुझे बहुत पसंद आया, और उसमें से जो स्लो पोर्शन तुमने किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. देखो उसका कितना स्टाइल, मतलब उस समय उन्होंने साफ मुझे कहा नहीं कि तुम्हारा डांस खराब हुआ या. और उसके बाद उन्होंने किस तरह से मुझे
जब अच्छा हुआ तो उसके लिए तो बड़ा भी होना चाहिए, वो भी है इतनी ऐसी बातें करने से। I feel myself that each and every critic matters. I will first start with one absolute important section, which is of Buzurg people, maestros from music, dance, or any other field. Their critique has to be taken sarakobar. I think that anybody who is interested in their own betterment, they have to pay attention to each critic, respect it, and later you can observe it, say decipher it, consult your own guru, and then decide whether there is whether it is contributing to your progress. I think that there are going to be different points of view regarding different schools of thought or styles or interpretations, anything. But you have to make the best of that comment, anything you receive. Another thing is there that you have asked that why would people keep their opinions to themselves, hold them back or hesitate. So one thing is for sure that if it is a critic within the school, I mean, if you have a real Guru-Shishya relation, then you are going to have the purest critic that you have to pay attention to, even the seniors to juniors or juniors to seniors, because the perspective is the same there and it is constructive and you can benefit from that. Other than that, for other people, there may be other reasons why they hold back their views. One could be simple thing, could be a hesitation or being inhibited. Not everybody is free to give their comment. Secondly, they might feel that might hurt or discourage the dancer. That is also there. It is possible that the person is not interested in the dancer. And there is also a fear sometimes that when you comment on something that might be taken as a questioning the training of the dancer, which you just can't do. The critic and criticism in learning process and throughout, even today from the end, it's very important. It adds मेरे नॉलेज में मेरे पढ़ने में बहुत मदद करता है. डिपेंड्स कि एज ए स्टूडेंट हर चीज़ को मैं पैशनेटली सीखने की दृष्टि से भी देखूं कि छोटा से छोटा स्टूडेंट से घर में मेरे पेरेंट्स और एनी प्रोफेशनल डांसर और गुरु जो भी एक चीज़ बोलता है, मैं मेरे जीवन में हर दिन ये चीज़ पकड़ के रखी कि अच्छा ओके ये मुझे सीखना, अच्छा ये मुझे चेंज करना चाहिए, मे बी आई एम रॉन्ग हियर, आई हैव टू सी. सो क्रिटिसिज्म एंड क्रिटिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एक आर्टिस्ट के ग्रोथ में, वो होना ही चाहिए. हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में सीखें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पेरेंट माँ घर में और गुरु सबसे पहला क्रिटिक होता है, होना ही चाहिए. पर मैं इसे समीक्षा नहीं मानती. तो नॉलेजेबल क्रिटिक्स बहुत ज़रूरी है, जो कि आज भी मतलब 10 साल से पहले हम जो क्रिटिसिज्म या क्रिटिक लिखते थे वो सब एज में बड़े जिनको सही मायने में जिन्होंने जनरेशंस देखी है, कथक कैसे ग्रो हुआ है, कैसे चेंज हुआ है देखा है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर critics, and that in this period I am missing, especially in new generation. Healthy criticism is very important for both audience also, क्योंकि मुझे लगता है audience भी knowledgeable होनी चाहिए. Still today I am missing on social media platform. I have not seen much pages or Instagram pages or whatever YouTube where कि हिंदी फिल्म्स के लिए क्रिटिसिज्म का कुछ पेज है, क्रिटिसिज्म है. बॉलीवुड पे कुछ भी मूवी आता है तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ओपनली बात करते हैं. तो आई डोंट सी दिस कथक परफॉर्मेंसेस मच, एंड मैं यही चाहूँगी कि यंग जनरेशन इसी तरह से कुछ सोचें एंड टेक इट पॉजिटिवली टू ग्रो एज ए
artist. At which critic is honest. How do you know that? So by experience, I've realized that if somebody says something with some specification, then you can clearly see that that person is taking interest in you and is saying for your benefit. So that is one indication. And as we are talking on behalf of us, I think from my side, I say that whenever some performer comes and asks, "Kai kasं वाटलं?" So I give my honest opinion. You know, if they want it, you can. But otherwise, it's difficult. That's true कि अगर किसी ने पूछा ही नहीं तो क्रिटिक कैसे देंगे? There are several factors we will have to take into consideration. First of all is who is giving the criticism. As in, how much knowledgeable that person is. Knowledgeable in terms we are saying how much well read that person is, how much well does he know about the form, how much well does he is informed about the social statements and social conditions of our society, how much he is sensitive about the society and the answers and the people around us, and all these things matters a lot. So I think for criticism we have to understand that analysis is very much important, and if the analysis with any person or any even yourself is lacking, then I do not think that criticism matters to me a lot. People can pick up different things कि you know किसी को emotion ज़्यादा बोल गया, किसी को technical visual ज़्यादा पसंद आ गया. So then how do you know that a critique that is coming to you is truly objective? I'll continue with your point. Yeah. I have something to say that first of all, the critique has to be extremely good viewer. If he is not, he is coming to the program and sitting like today I'll see what exactly the points are going to be, where he is going wrong, where she is going to make mistakes, then that critique is definitely not something who's looking at the perspective in a wholesome way. The person is not knowledgeable or he is not ready to comment on anything, that's okay. But जो हम प्रोडक्ट करते हैं उसमें कॉमन ऑडियंस भी कुछ कमेंट करें या नॉलेजेबल पर्सन भी कुछ कमेंट करें. एज ए परफॉर्मर वी हैव टू थिंक कि एकदम कॉमन ऑडियंस जिसको कुछ समझ नहीं आता फिर भी द ओवरऑल इम्प्रेशन कुछ न कुछ मिलता है हमें कि जिसमें हम ग्रो करने की संभावना बढ़ती है. Learning never stops, and that is why I was coming with the point that you can differ with the criticism, but you Yes. can't ignore it. या अगर क्रिटिक को कोई ओपिनियन नहीं है तो then what do you do? But और आई थिंक ये ऐसे नहीं है कपते सर, आपने जैसे बोला कि अगर किसी ने कुछ नहीं बोला तो मतलब ठीक है नहीं पसंद आया, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि क्रिटिक अगर क्रिटिसिज्म देने के लिए ही बुलाए हैं और अगर वो भी इवन इफ इट इज नेगेटिव अगर कुछ नहीं बोले तो फिर क्या ले सकते हैं? हाउ कैन यू हैव क्रिटिक? Just right after watching the performance, some of the people come and say something about the program. That is not criticism, that's their opinion. So they watch it, they pursue it, they understand it well, they think about it, and then they write it. And that is why there are so many scholars whom I've met. I told them to, can you just say some, just continue with the social media content. I've asked them to share a video bite with us. And they said, no, it is not possible for me. I'll have to go, I'll have to think about it, and then only I can be able to write it or pursue it really well. So that is why I feel it is absolutely right that you have to understand that something immediate comment on the performance can not be a criticism or a critical statement. You have to analyze it. क्रिटिसिज्म ये हमारी उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम कुछ सोचते हैं अपने दिमाग से, अगर क्रिटिक्स जो आते हैं उनको वो समझ में नहीं आया तो वो जो भी उन्होंने लिखा है, तो मेरे बारे में जितनी बार ऐसे हुआ है, हालांकि वो क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जितनी बार हुआ है वो मेरे फ़ायदे की बात इस प्रकार हो गई, मैंने जाके पूछा उनको कि आपको क्या समझ में नहीं आया. बहुत ही बुरी तरह से मैंने एक नाटक लिखा था 99 की बात कर रही हूँ, शाम सखी, हिंदी में लिखा था, मेरा पहला नाटक था पृथ्वी फेस्टिवल में. तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा, नाम लेने के लिए कोई हर्ज नहीं क्योंकि मेरे वो गुरु भी बन गए बाद में.
डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी नाटक के क्रिटिक भी है, तो उन्होंने लिखा बहुत अच्छा नाटक है, सब कुछ आधे पेज का रिव्यू था, लेकिन लास्ट में 2 लाइन थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मराठी ग्रुप होते हुए भी, लास्ट मराठी और प्रादेशिक थे, हिंदी में नाटक लिख के हिंदी का मतलब मैं शब्द नहीं यूज करना चाहती, फोन करने की क्या जरूरत थी। आई वॉज सो एंग्री। आई सेड कौन है ये, मैं जाके मिली उनसे, मैं बोली मैंने तो 10 डिक्शनरी फॉलो करके उसको लिखा है। वो बोली कि बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी का लहजा नहीं आ रहा था। यू वोंट बिलीव, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी और उन्हीं के प्रोत्साहन से मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया। और उसके बाद जो अच्छी चीज़ें होती हैं तो टेक इट पॉजिटिवली, लेकिन टेक इट पॉजिटिवली दिस वे ऑल्सो। देखो कविता लिखते हैं कवि, वो ऊपर चले गए, लेकिन उनके मन में क्या भावना थी वो हम नहीं जानते, लेकिन हमें जितना समझ में आता है उतना हम समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आप जो काम कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे नहीं समझना आपने बहुत बुरा काम किया, आपने मेहनत की है, लेकिन अगर किसको नहीं समझ में आया या बैड क्रिटिसिज्म हुआ है तो जानने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और एक इंसिडेंट छोटा सा बताती हूँ। चेतन दातार वॉज माई डायरेक्टर, ही इज़ नो मोर नाउ। तो हमारी नृत्य शैली की जो परंपरा है, मुझसे छोटे थे चेतन दातार, लेकिन आप जो बोले सो परफेक्ट है करके। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपको चिल्लाना, यहाँ पे आपको जोर से हंसना है, आप यहाँ पे रोना है, कहते ठीक है। जयंत पवार सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे क्रिटिक महाराष्ट्र टाइम्स के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे बारे में लिखा, लेकिन लास्ट में एक सेंटेंस लिखा, भाई खूप छान करतात पण तार सप्तकात बोलतात, लागली मनाला ये। आई सेड चेतन यू टोल्ड मी टू शाउट। ऐसे तर सबने क्या आपको अच्छा ही बोलना चाहिए क्या? कि हाँ, ये भी मुझे देना चाहिए। तो इट्स नॉट बैड, क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट क्रिटिक वांट टू से। और अगर अच्छा है बुरा है तो उसे अच्छी तरह से लेंगे तो हमारी फायदे की बात है। धन्यवाद। That's really true. So one thing that stood out to me was कि सब लोगों ने कहा कि कहीं से भी कुछ अच्छा क्रिटिसिज्म मिल जाता है और कभी कभी ऐसे लग सकता है कि अरे ये क्या बोल दिया, but then you put your ego aside and you address it and you're like no, actually there's a point. So maybe Radhika, do you want to speak a little bit about what do you think about where do you think good criticism can come from? I think for me personally, when I look out for criticism, there is a process that I've adapted for myself, which I am trying to follow. Nothing that's universal. I'm too young to make a universal process. But I think first is knowing where you want to go. There are thousands of incredible artists that have happened, and you might not necessarily want to follow them, and that's okay. So when you know where you want to go, like everybody said, you prioritize the criticism. Like Nirmata said, criticism can come from anywhere, but you decide what you want to do with it, or Mayur also said, and then you discard what you don't like and you move on. I think then everybody also spoke about people who have the knowledge of dance, people who are well read, I think Mayur said, and etc. I think beyond all of that, for me what matters is good criticism comes from somebody who's doing what you're doing. Either they are working, they have created something that is similar to you or way more bigger than you, who have had the experience themselves, who have failed and made work. For me, good criticism comes from people who have done it, not just the people who have read or talk about it. Interesting. Siddhi, Mugdha, one of you would like to add to that? Do you agree? Do you have a different perspective? One is, I think, a lot has been said about the one who is giving criticism, but it's also about the person who is seeking criticism. अगर कोई मुझसे पूछता है सिद्धि कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा. But if someone says, Siddhi, tell me what didn't work. Did something feel off? Was the music good? Was the lighting good? Then I know that the other person is actually seeking some very good feedback. Then I will also think, अच्छा ठीक है मैं सोच के बताती हूँ. So I think good criticism is also like seeking knowledge. So you have to seek it. And it is your responsibility to seek it in the people you trust will give you an honest feedback. That's important because I think as dancers also, I think what I'm taking from what you said is कि सिर्फ criticism अच्छी तरीके से देना नहीं, तो criticism अच्छा पूछना कैसे है? How do you seek it in a clear मुझे manner? चाहिए ना, मुझे चाहिए तो मेरी जिम्मेदारी है.
I think it is my responsibility. And then as Sai was also saying that, a lot of people will give you criticism, and then how to distinguish which one to take, which one not to take. I think good criticism unlocks something in you. It works like a prompt, and it will hit you, and then you will know that this is the criticism I want to stay with. And the second thing, very briefly, I want to add is that for me, a lot of very good criticism in my career has come from people who are not from dance. And I think that's very important, because as dancers we're so consumed in our dance class life. Most of our friends are dancers. We don't have a life outside of dance. And that's why for us many things are normal. Like for me, some of my hardest feedback comes from my husband, who's not from the field of that. So many times I take him to all dance performances and he feels so out of place. I don't feel out of place because I've been here since the age of 6. I know everyone will dress up in a sari, I know everyone will do namaskar, I know everyone, सबको पता है ताल क्या है, लय क्या है, नंबर क्या है. But जो out of place feel कर रहा है, उसके लिए डांस में कैसे connect करना है? What is he looking for in the dance? So I think to surround yourself with people who are not from dance, maybe from design, maybe from painting, maybe from literature, maybe from engineering, maybe from architecture. They may have a lot of, they could just have a creative bent of mind, that is all. That's all you need. That's very insightful. Thank you. That's very interesting. Mugha, yeah, please. Yeah, as you said, a lot is being said. There's only so much that I can add to it. But as Rajesh said, we put our whole and soul in the performance, in practicing. So it's very easy to take everything personally. We are that. It's so difficult to differentiate that this is my dance, this is me, and this is criticism for this performance, and not my entire practice or myself. And we are sensitive people. We take everything to heart. We cry so much. So it's understandable, but not really thick-skinned, but pragmatic about what is being said. Like, okay, I can take this with a pinch of salt. At times, anybody, especially your guru, but anybody else, just points out a blind spot. Like, this was missing, and it just clicks, and then you just change. And as Rajeshita mentioned, somebody said that, okay, Hindi can be better. So you are saying, no, it's good. Keeping it aside, you get better at it. No matter what age, stage, ego, bajula theory, you just work on it. It helps. That's true. Yeah, the point of neutrality is very important. कि it's not even just कि अपने आप को tough बनाओ, क्योंकि अपने आप पे लो ही मत. वो it's about what you have created. अभी नहीं आ हाँ. आ जाएगा. Eventually. That's that's true. Very interesting. Also, Yes. likability. It's got a little, I think, economics to it also. When we are at a place where I know you will also get a program, I'll also get, she'll also get, we'll all get programs. I don't have to be likable. Since there are only few spots and a lot of people going for it, let me be likable. Like, let nobody say bad thing about me. I'll go for everybody's performance, I'll say nice things, everybody will say nice things about me, and then it's sort of connected, it's cyclical. So to really break it, we have to have a good place where I want everybody to thrive, because we are a community. Let your classes be thriving, mine also, somebody else's. I'll also post about it. So that really creates a sense of community. And that is, I think, when we can have friends and fellow dancers coming up and saying, you know what, work on this. Yeah. I know you have potential, go for it. And not think, okay, this is competition. Very interesting insights, and I know we've seen some opposing views also on some topics, but I think there's a lot to take away here. And I beg to differ with Pradipka's point also. Like she said, the person needs to, who is in the game of that dance or what. But I feel not necessarily every time it is needed. Like we have some of the examples like Leela Venkatarajin, who was not a dancer, but she was a, what do we say? She was extremely excellent critique I've seen, up to the mark. As in, who was an excellent example who was not a dancer but still knew the every perspective of the dance. तो क्लैरिफिकेशंस आल्सो होने चाहिए. अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई ये नहीं समझ में आया कि ये क्यों किया ऐसे, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस.
एंड आई एक्चुअली डू अप्रिशिएट अगर किसी ने मुझे पूछा कि तुमने ये वाला पार्ट ऐसे क्यों किया, तो देन इट मेक्स मी फील लिटिल मोर कि अरे सामने वाला इन्वॉल्वमेंट से कुछ पूछ रहा है, एंड इट मेक्स यू रीइवैल्यूएट अपने आप का थिंकिंग प्रोसेस कि अच्छा ये मैंने क्यों किया था, डू आई हैव एन आंसर फॉर व्हाई आई डिड दिस इन दिस वे एंड नॉट इन दैट वे. Nilima, you want to say something? I just wanted to give an example that I remembered. I have seen a critic writing in Hindi, and he records the whole program so as to remember what all was done. And I had read his review regarding our performance, and I was wondering how come he remembered it all, and there were so many details. And next time I was sitting next to him, and I liked the method. It is very studious. Before you write something, you should really remember what you're talking about. The inspiring stories that the gurus have shared, I think we need to understand the difference between opinion and critique. One thing that हम लोग किसको क्रिटिक का दर्जा दे रहे हैं, ये भी देखना और सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है. ऐसा मुझे लगता है. Meet that somewhere. So why not work towards building good dancers as critics, or some knowledgeable person who has gathered that knowledge, has done a course, knows about all the arts, and then is looking at your performance with those perspectives. Firstly, this is a very nice topic that we are discussing. उसमें थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया वो. दो बातें मैं लाइन में बोलना चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म करने वाले का दिल भी बड़ा होना चाहिए और लेने वाले का भी बड़ा. चाहे वो हमें अच्छा क्रिटिसिज्म लगे या न लगे. दूसरी बात ऐसी है कि लाइक ओवर लास्ट 50 years आई एम नॉट सेटिस्फाइड द वे स्टूडेंट्स टेकिंग सीरियसली. वो ऐसे लेते हैं हाँ एक पेपर है कर देंगे, क्योंकि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रोग्राम एज एन आर्टिस्ट हम पहले मिनट से क्रिटिसाइज करना चालू करते. तो पहले क्रिटिक करने वाला जो हो या आर्टिस्ट हो हमारे जैसे, तो पहले जाके एंजॉय तो करे कि क्या प्रोग्राम हो रहा है, उसके बाद नोट डाउन करे कि मुझे क्या अच्छा लगा और मुझे क्या नहीं अच्छा लगा. And I think that's one of the big takeaways from today's discussion कि एक तो क्रिटिक को कैसे देखना है ये तो हमने सुना, लेकिन क्रिटिसिज्म हमें चाहिए. वी नीड गुड नॉलेजेबल क्रिटिक्स इन दिस फील्ड, और होपफुली अब यहाँ से हम इससे कुछ कर सकते हैं आगे जाके कि either, I mean like you said, we don't, dancers don't have to turn into critics, but I hope कि अब यहाँ से ऐसे कुछ हो जाए कि criticism as a profession वापस ज़्यादा knowledgeable and at a good stature, hopefully we will be able to see, and I think that's a nice takeaway. And with that I want to take just like a 2-3 minute break before we move to the next topic, which is repertoire and the importance of repertoire today and how it evolves.